सर हाउस हैज टू बी इन ऑर्डर, इतना इम्पोर्टेंट बिल है। आप बीजेपी के भी लोग बोलने लगे, ये देखिए बीजेपी के भी लोग बोलने लगे, ये देखिए ट्रेजरी बेंच भी बोलने लगी अभी। बैठ जाइए ना। हम लोग भी शांति से बैठ जाए, हमने अपना मत बोल दिया, हमने जो बोलना था। पांडे जी बैठ जाइए। ओके, हाँ जी, ओके, थैंक यू मैडम। आई स्टैंड हियर टू अपोज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021। आज मनीष जी और मीनाक्षी जी दोनों का बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला, बहुत नया सीखने को भी मिला। दो लॉयर जैसे बोल रहे थे, लेकिन थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूंगी कि इसका एक पॉइंटेड क्लैरिफिकेशन मंत्री जी दे, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन इन व्हाट इट हैज बीन इंटरप्रिटेड, सो आई नीड अ क्लियर contribution. It's a specific pointed question to the honorable minister that she has said in her speech, where she's corrected Mr. Manish Tiwari in 284.12. I won't read the first two lines, I'll read what is relevant to you. It says the status of NCT in Delhi in the Sioux Grenades is a class part, and the status of the Lieutenant Governor of Delhi, the LG, is not of a governor of a state. Rather, he remains an administrator in limited sense, working with the designation as an LG. So his role is of a limited sense. So can you clarify, because there's a contradiction in what he has said, which we have interpreted in English, vis-a-vis what your honorable member from the BJP has said. So I think the minister would be the right and appropriate authority to clarify to this nation is whether it is an LG, because then as an administrator, she said his rights are slightly different. As whatever little that we understand, what Meenakshi she said is very true. हम थोड़े दिन के लिए दिल्ली में आते हैं, और जो भी हमको यहाँ का मैनेजमेंट है, जो उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, I understand where you're coming from. But there are 2 or 3 questions which I would like to ask as a novice to you. Is you talked about Delhi's management, about water, about बिजली, की बिजली केंद्र सरकार देती है लेकिन फोटो CM का लगता है। ये तो हर जगह होता है, हमारे टाइम में भी हुआ करता था, अलग अलग राज्य होते हैं। बट what was very interesting for me is दिल्ली में आम आदमी को एक नहीं शायद 2 या 3 बार चुन के बड़ी मेजॉरिटी से दिया है, तो कुछ तो ढंग का करते होंगे। एंड व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका दिनेश भाई ने भी कहा कि यहाँ के MLAs को 10 करोड़ रुपया देते हैं। अभी कोविड में हमारे तो 12 करोड़ रुपया MP लैड्स काटा है, महाराष्ट्र में 5 करोड़ दिया है, दिल्ली में 10 करोड़ दिया है। इतना पैसा अगर एक स्टेट दे सकती है जब हमारे GST का पैसा नहीं आया, तो कुछ तो दिल्ली में ठीक कर रही होगी सरकार। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, और 10 MLA तो 100 करे। Meenakshi ji is a very good friend of mine, and I didn't heckle and I never heckle her. So just hear me out. That is precisely the point, that what we get as 5 crore, you can see the impact, but 100 crore for the same area and there is no impact. People are crying and people are coming and asking questions to me that get this done, get that done, and I'm like, I have no money. The money is vests with the state government, and where MLAs are non-performers. That's the point. No, I appreciate that. I think you should raise it with the Honorable Finance Minister when the finance bill, because if she gives us 5 crores, we can all spend it as MP lads in our constituency. Not with the LG, because these are the work of Delhi administration, and administration should do that. Well, roads have to be made, water needs to be supplied, irrespective of who is in the government. Well, I appreciate what you're saying, but the point is the fact that they get elected with such a large majority, कुछ तो ढंग का करते होंगे, इतना भी नहीं है. And I think it's very unfair, because I think out of 70, 62, please correct my numbers, second time round अगर इतने third time round इतने चुन के आए, तो इतना भी गलत नहीं कर सकते. I understand there will be challenges. I've been through what you have been through, because 5 years जब महाराष्ट्र में किसी और विचार की चर्चा सरकार थी, तभी हमें भी वही दिक्कत आती थी. आपके गिरीश बापट जी यहाँ नहीं है, हमारे पालक मंत्री थे, हमें भी बहुत चक्कर काटने पड़ते थे तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ पैसा नहीं मिलता था. लकीली अभी बदलाव हो गया और हमारे यहाँ थोड़ी अलग सी सिस्टम है. किसी की भी सरकार हो, किसी विचार का भी MLA MP हो, उसको
को पैसा दिया जाता है। आप बीजेपी की एमपीज को एमएलएस को पूछिए महाराष्ट्र में, हमारे ऐसी राजनीति नहीं होती। बट आई थिंक दे आर डूइंग अ फेली गुड जॉब। दूसरी उन्होंने एक कहा चीज़ कि बड़े बड़े इश्तिहार चलते हैं। आई नो दिस इज नॉट कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट बट सिंस द ट्रेजरी बेंच ब्रॉट इट, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एडवर्टाइजमेंट्स महाराष्ट्र कहाँ चलते हैं, आपने बोला दिल्ली के देश भर में चलते हैं। वेल महाराष्ट्र में यूपी के भी बहुत एडवर्टाइजर, हमारे इश्तिहार वाले बहुत खुश है, पेपर वाले बड़े खुश है, लेकिन कहीं भी आप देश में जाओ बड़ी सारे राज्य है जो बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्चते। एक दिल्ली वाली नहीं है, यूपी वाले भी फुल पेज एड्स हमारे यहाँ देते हैं अलग अलग स्कीम्स के। नहीं, अच्छी बात है, मैं नहीं टिक्का कर रही हूँ, मीनाक्षी जी कर रही थी इसीलिए मैं उसको ऐड कर रही हूँ। और अगर मीनाक्षी का सुझाव हो तो मैं भी मीनाक्षी जी से विनती करूँगी, अगर आपको ये गलत लगता हो कि बहुत सारा खर्चा हर सरकार कर रही है एडवर्टाइजिंग पे, क्यों ना हम सब मिलके सोचे कि आज से एडवर्टाइजिंग पे ना आपकी ना हमारी किसी की भी सरकार ना करे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अवेयरनेस या कोविड ऐसे कुछ सिर्फ स्कीम्स के बारे में बता दे, बाकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो नहीं करे। ऐसा भी आपका अगर सुझाव हो तो आई विल होल हार्टेडली सपोर्ट यू, टुगेदर वी कैन पास इट इन द सेंस ऑफ द हाउस। सो आई थिंक कौन बोला जा रहा है, हेकल कर रहा है, दिल्ली शहर है, बोलो भैया, it's a city, it's a city, that's the point. Sorry, no, I appreciate, I'm appreciating It's your just a point. city, for one city, No, 524 I'm appreciating your crores. point. I agree with you. No government should do any advertising which are electoral. They should focus on governance, which is unfortunate. But I want this clarification because I'm very worried because India's ratings, I know you all don't like international courts, but I have seen this Freedom House report and VDIM's report, because this government selectively uses international relationships and not. But they have said India is going through an electoral autocracy. Now, cooperative federalism is something which your government constantly talks about. I think this legislation is going to affect cooperative federalism. I think if any MLAs, MPs are feeling threatened, I think we have to have a larger debate. I'm not completely against with what you're saying. I respect what you said. एक मिनट में सिर्फ मेरा एक सुझाव पूछूंगी कि if you feel there is such a contrast of decisions, why not send this bill to a select committee? जल्दी क्या है, कोई जल्दी नहीं है, भले 3 महीना ले लो, एक select committee में भेजिए, call the minister of the chief minister of Delhi, MLAs को बोलिए, इतना बवाल और इतनी जल्दी करने की, it's not a national crisis. Why not send this bill to a select committee? Meenakshi ji and all MPs of Delhi can participate. The chief minister of Delhi, MLAs can be consulted, and unanimously, I think it's a very, very important bill. So I urge this government, kindly send it to select committee, and I'm sure a good legislation will come when all parties put their good mind in the larger interest of this nation. Thank you.